Their house. Now you can see this here. This is a house. You can see this is the flat in which the mommy works. Mommy took me first to Harsh's house. His house was on the 12th floor. What a big house! So many rooms, one to sit in, one to eat in, one to sleep in, and one to cook in. Now सबसे पहले मामी उसको कहाँ पर ले गई? सबसे पहले मामी उसको हर्ष के घर पे ले गई और उसका घर कौन से फ्लोर पे था? उसका घर था 12th फ्लोर पे. हर्ष हाउस वाज ऑन द 12th floor and it was a very big house. Each there was a separate room for each activity, like for cooking one separate, then eating another, sleeping another, for sitting another. So many different rooms were there. Their toilet was also in the हाउस. और ये चीज़ उसको देख के भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जो टॉयलेट है वो भी घर के अंदर ही है, क्योंकि विलेजेस में तो टॉयलेट घर के अंदर होता ही नहीं है. नॉर्मली पीपल डोंट हैव टॉयलेट्स इन द विलेजेस इन देयर होम्स. It took Mami a lot of time to clean Harsh's house, but she could work easily. इतना बड़ा घर था इसलिए उसकी मामी को बहुत टाइम लगा पूरे घर को क्लीन करने के लिए, but because she had a practice of cleaning such a big house, so she could easily clean it. There was a tap in the kitchen and water flowed from it. And the water was also there in the house, only in the kitchen. The tap was there and the water easily flowed in from that tap. Moving on to page number 134 now. Harsh had put a bucket below the tap to fill water for his bath, but then he sat down to watch TV. So much water was wasted. I did not like it. I went and closed the tap. Now, when she was there at the Harsh's house, then Harsh had put a bucket in the bathroom to fill under the tap to fill that bucket for bath. But then he opened the tap and he left the tap as it is and he sat and started watching the TV. Tejal did not like this because she could see that water overflowing from bucket and the water was getting wasted. So she went in the bathroom and closed the tap. Harsh's house has big glass windows also. Mommy told me to look down from the window. Now हर्ष के घर में क्या था? बड़ी बड़ी कांच की विंडोज भी थी और मामी ने उसको क्या बोला कि इस विंडो से तुम नीचे देखो. फ्रॉम द 12th floor, window of the 12th floor, you look down. I could see Mama's street and the houses, but I could not make out which was his house. वहाँ से जहाँ पे वो काम कर रही थी वहाँ से उसको उसके मामा की जो स्ट्रीट थी, जो गली थी, वो तो उसको दिख रही थी. But so many houses she could see, but she could not make out which was her mama's house from that. From up there, everything below looked like small toys. It was I was quite afraid to look down at from such a great height. Now, वहाँ से इतनी height से वो जब देख रही थी तो everything was looking very very small. When you look something from a great height, तो ऊपर से जब आप नीचे कोई चीज़ को देखते हैं तो वो बहुत height से जब देखते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत छोटी दिखती है. The same thing happened when she saw from the 12th floor. Everything was looking very very small like the toys. But as she looked down, she again was scared to see that she was at such a great height. 12th floor means quite height is there. You can see this is the picture of the street where they lived near the mama's house. और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उनके घर के पास. Now another questionnaire is there. When Tejal first came to Ahmedabad, what were the things she was afraid of to do? Tejal was afraid of crowd, getting in and out of the train, to travel in the bus, walk along the crowded roads, getting into the lift in a high-rise building. तो ये सारी चीज़ों से तेजल को डर लगता था. Now moving on to page 135, again few questions are there. What were the difference between the houses where Mama lived and the houses of the high-rise building? This answer we'll write in the workbook only.
द मेन डिफरेंस वॉज दैट इन द हाई राइज बिल्डिंग्स में क्या था कि सारे एक्टिविटीज़ के लिए फॉर स्लीपिंग, ईटिंग, कुकिंग, बाथिंग, सिटिंग, वी हैड अ सेपरेट रूम एंड देर वॉज अ टैप्स एंड टॉयलेट्स, एवरीथिंग वॉज देयर इनसाइड इन द हाउस ओनली. Whereas at Mama's place, everything was to be done in the one room only. There was a public tap and a public toilet to be used. No separate tap for water and no toilet, separate toilet also. And everything to be done in one single room only. That was the difference in the house of Mama's house and the houses in the high-rise building. Now, house in the area where Mama lived and houses in the high-rise building. You have to write the differences here. You have to write one common toilet, one common tap, one room to do everything and no glass windows. और वहाँ पर क्या था, और जो one room था उसके अंदर कोई भी windows भी नहीं थे. Whereas separate toilet, separate tap everywhere, separate room for doing all the activities and each house has glass windows. मतलब कि जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स थे वहाँ सब जगह ग्लास विंडोज भी थे, लेकिन जहाँ सिंगल रूम था मामा के वहाँ पर कोई भी विंडो नहीं था. So that was the difference. Now talk about yourself. Draw a circle around the kind of house you live in. Is it like the house of? मतलब कौन कैसे हाउस में आप रहते हैं, तेजल के घर के जैसे, उसके मामा के घर के जैसे, हर्ष के घर के जैसे, या एनी अदर काइंड. तो ये तीनों मेरे उसमें नहीं आते हैं, मैंने एनी अदर काइंड लिखा हुआ है. आपका इसमें से जो भी मैच करता है, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो आप हर्ष का लिख सकते हैं. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस? हमारे घर में पानी कहाँ से आता है? हमारे घर में पानी जो है टैप से आता है, और वो टैप की जो पाइपलाइंस होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं म्यूनसिपैलिटी लाइन से, और म्यूनसिपैलिटी जो है वो पानी हमको प्रोवाइड करता है. Is there an electricity connection in your house? For how many hours do you get the electricity? Yes, we have electricity connection in our house and we get electricity for all the 24 hours. And मतलब कि रोज़ पूरे 24 घंटे हमारे यहाँ लाइट होती है. So we get the electricity for 24 hours. What is the which is the nearest hospital in the area where you live? अब हम जहाँ रहते हैं हमारे घर से तो नियरेस्ट प्रमुख हॉस्पिटल है या सीजे हॉस्पिटल है. आप जिस एरिया में रहते हैं और जो भी हॉस्पिटल है, यू कैन राइट दैट नेम. How far are the places given below it from your house? Now here I have written the approximate town. आपके घर से जो है बस स्टॉप, स्कूल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल और ये सारी चीज़ें आपके घर से कितनी दूर है. यहाँ पर बस स्टॉप है, मैंने 5 मिनट्स लिखा है, हाफ किलोमीटर. स्कूल 20 मिनट्स 4 किलोमीटर्स, मार्केट 10 मिनट्स 2 किलोमीटर्स, पोस्ट ऑफिस 15 मिनट्स 3 किलोमीटर्स, हॉस्पिटल 20 मिनट्स 4 किलोमीटर्स. ऐसा मैंने लिखा है. यू कैन मेक एनी चेंजेस एज यू लाइक. नाउ दिस इज द वर्क, यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक. ये आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस इन योर एरिया. आपके एरिया में जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको हाउसेस दिखते हैं, वो हर हाउस का एक पिक्चर आपको आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है. Now, dear children, we move on to page number 136. Trouble. Now, there has been a twist where Tejal's mama lives. And what is the twist? That we will see. You can see this is the place. This is the picture of a riverfront in Ahmedabad, which is very famous. And most of you must have seen that also. Mama has said that he would take me around to see Ahmedabad. The children around here talk a lot about riverfront. They are telling that the big film stars, leaders, and sport persons also come here. Maybe when I go there, I might see them there. नाउ तेजल को क्या था, तेजल के मामा ने उसको ऐसा बोला था कि जब वो अहमदाबाद आएगी तो उसको अहमदाबाद की पूरी सैर कराएंगे. मतलब ही विल टेक हर अराउंड टू द एंटायर अहमदाबाद, ऑल द लवली प्लेसेस दैट is there to see. And all the people were talking about the riverfront. So because it was told to Tejal that all the film stars, leaders, sports person, everybody comes to see that riverfront. So she thought that if I go, I might also get a chance to see them. These days, Mama is so worried. I cannot ask him to take me to riverfront. Last week, some people had come with a notice that everyone should move out of this place.
But the problem is that she cannot ask her mama to take her to the riverfront because he is a bit worried. The reason is that they have to vacate the house because there some people had come few days ago with a notice that they have to leave this area and move out to another place. मतलब कुछ लोग एक नोटिस लेकर आए थे कि अब ये जगह उनको खाली करके दूसरी जगह रहने जाना होगा. तो तेजल ऐसा सोचते कि ऐसी तकलीफ है मामा को, जब घर बदलना है, घर खाली करके दूसरी जगह जगह ढूंढ के रहने जाना है, तो ऐसे में उनको मैं नहीं कह सकती कि आप मुझको जो है रिवर फ्रंट पे ले जाओ. सो शी इज़ वेरी क्लेवर, वाइज है. वो सोचती है कि ऐसा कहने से और उसके मामा को और भी तकलीफ होगी. दिस प्लेस बिलोंग्स टू गवर्नमेंट सो इट शुड बी वेकेटेड. वो नोटिस में क्या लिखा हुआ था कि ये प्लेस जो है गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं जहाँ पर उनके घर बने हुए हैं, इसलिए उनको ये जगह वेकेट मीन्स खाली करनी पड़ेगी. मामा इज सेइंग दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years that he has got such notices. मतलब for last 10 years Tejal's mama is living here in this place only, and he is telling that this is the third time that such notice has come. तीसरी बार जो है, थर्ड टाइम, ये 10 सालों में, पूरे 10 years में ये नोटिस ऐसा आया कि जगह खाली करनी है. पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस. और वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो जो लोग यहाँ रहते हैं उनको दूसरी जगह प्रोवाइड की गई है घर बनाने के लिए. बट इट इज़ अ लिटिल बिट फार, लेकिन वो जगह जो है थोड़ी दूर है. मामा विल हैव टू स्पेंड मोर मनी एंड टाइम टू रीच एट हिज वर्क प्लेस. अगर दूर है तो जहाँ पर काम करते हैं उसके मामा तेजल के, उनको जो है ज़्यादा टाइम भी लगेगा अपने काम पर पहुंचने के लिए, और ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे उस जगह अपने काम वर्क प्लेस पे काम की जगह पर पहुंचने के लिए. मामी विल हैव टू फाइंड सम अदर वर्क. और मामी को भी वहाँ से आने के लिए यहाँ जो 7 हाउसेस में मेड का काम करती है वो भी उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर दूर घर में वो रहते हैं तो वहाँ से उनको आने जाने में प्रॉब्लम होगी, और इसलिए ये काम भी उनको छोड़ के कुछ और काम ढूंढना पड़ेगा. हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर. फिर उसने सोचा कि अगर यहाँ से अगर घर दूर हो गया तो मैं अपनी मम्मी को हॉस्पिटल कैसे विजिट करूँगी. येट मदर इज़ नॉट कम्प्लीटली वेल. मम्मी अभी तक एकदम ठीक नहीं है, तो मैं अपनी मम्मी को हॉस्पिटल रोज मिलने कैसे जाऊंगी. सो दीज वर द वरीज दैट वर देयर इन द एंड विद द तेजल, कि अगर उसके मामा को घर शिफ्ट करना पड़ेगा, दूर जगह पर रहना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होगी, क्योंकि अभी मम्मी ठीक नहीं हुई है, मम्मी स्टिल इन द हॉस्पिटल. देन हाउ आई विल मैनेज टू सी माई मदर डेली. So this was the story of a little girl Tejal who first came to Ahmedabad with her mother, and what things differences in the living type of living that is there in the city and that is there in the villages, and what problems they have to face while living in the cities in such narrow lanes and in such small houses. Now dear children, you have to write certain things in the notebook, but these questions we will be doing in the notebook. ये सारे वर्कबुक में है ही है, इसलिए हम इसको सीधा डायरेक्टली वर्कबुक में ही लिखेंगे. नाउ हियर व्हाट इज दैट, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट. अब यहाँ पर आपको जो है आपके पसंद का एक घर ड्रॉ करना है. आपके पसंद का कोई भी तरीके का घर आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, एंड कलर इट ऑल्सो. द सेम थिंग इज देयर इन द वर्कबुक ऑल्सो, सो इन दैट ऑल्सो यू हैव टू डू. टेक्स्ट बुक में भी करना है, एंड सेम थिंग इन द वर्कबुक ऑल्सो you have to do. Now page number 137 is the new lesson. So with this drawing of a picture of a house, we wrap up with today's explanation part of Tejal in Ahmedabad. The workbook part will be explained in the next video. So dear children, I hope you all have understood the lesson. If you have any problem, you can ask me. Dear children, till we meet on the next turn with a new lesson. Till then, bye bye and happy and safe day ahead. Bye.